Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. The bunch of keys. A bunch of golden keys is mine, to make each day with gladness shine. Good morning, that's the golden key that unlocks every door for me. When evening comes, good night I say, and close the door of each glad day. When at the table, if you please, I take from off my bunch of keys. When friends give anything to me, I'll use the little thank you key. Excuse me, beg your pardon too, when by mistake some harm I do, or if unkindly harm I've given, with forgive me key I'll be forgiven. On a golden ring these keys I'll bind. This is its motto, be ye kind. इसके बाद ऑनरेबल टीचर, चूंकि आपने बच्चों से पोएम पढ़वानी है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि इसको आप खास अहमियत दें, इस बात को कि बच्चों को आपने समझाकर उनकी प्रैक्टिस करवानी है कि वो पोएम को पोएम की तरह पढ़ें. जैसे मैंने कोशिश की है, आई एम श्योर यू कैन रीड अ पोएम अ लॉट बेटर देन आई कैन डू. पोएम का रिदम और इंटोनेशन, यानी उतार चढ़ाव आवाज में, और जो उसका रिदम है, सुर में तो पढ़े ना बच्चे, तो आपने उनको मॉडल रीडिंग भी करके दिखानी है. उसके बाद बच्चों से जब पढ़वानी है तो बच्चे शौक से उसके रिदम को कायम रखते हुए